Good day everyone. Today we'll be continuing our discussion further with electrostats. But before continuing, one very important suggestion which I am receiving is I should use combination of both Hindi and English so that आप concept को और अच्छे से समझ सकें. So from now onwards, I try to use both the languages so that आपको concept अच्छे से समझ में आए. So today we will discuss about potential energy of a dipole placed in a uniform electric field. So let us start with the topic, that is potential energy of a dipole placed in uniform electric field. As you know, what is potential energy? Potential energy is the energy possessed by a body or an object by virtue of its position. In this case, its position will be in the electric field. मतलब potential energy क्या होती है? Potential energy is the energy जो एक बॉडी में होती है इस वजह से बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, और वो पोजीशन इस केस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड में है. सो how will that potential energy come into this body? So as I have told you, whenever you place an electric dipole in an electric field, it is going to experience some torque, and that torque is given by P cross E, that is cross product of dipole moment and electric field intensity. It is PE sin of theta. Now, this is the torque which is acting on the dipole whenever it is lying in the electric field. जब भी dipole electric field में है तो ये torque उस पर act कर रहा है. Suppose if I want to rotate this dipole, मैं इस dipole को घुमाना चाहता हूँ. घुमाना रोटेट करने से क्या होगा? एंगल बदल जाएगा. किसके किसके बीच का एंगल? एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो जब मैं इसको रोटेट करने की कोशिश करूंगा, व्हेन आई ट्राई टू रोटेट इट, आई विल हैव टू एक्सर्ट सम टॉर्क. मुझे कुछ टॉर्क अपने तरफ से लगाना होगा, ऐसे ही ये घूम नहीं जाएगा. इट विल नॉट रोटेट बाय इटसेल्फ. सो I have to exert some torque, and when I will exert some torque to rotate it by an angle theta, then I will do some work. जब मैं इसको rotate करूंगा torque लगा के, तो मैं कुछ work करूंगा, and you know the amount of work done when you exert some torque to rotate a body by angle theta is given by formula what? W, work done, is given by tau into theta, where this tau is what? Tau is the torque which you exert for which purpose? To rotate the body by an angle theta. So this is the amount of work done when you are exerting some torque tau to rotate a body by theta. Now if I want to rotate this dipole, I have to exert this amount of torque. मुझे इतना टॉर्क तो देना ही पड़ेगा ताकि वो बॉडी रोटेट कर जाए. सपोज आई एम ट्राइंग टू रोटेट दैट डाइपोल बाय अ वेरी स्मॉल एंगल, बहुत छोटा सा एंगल डी थीटा, बहुत छोटा सा एंगल, स्मॉल एंगल डी थीटा. मैं क्या कर रहा हूँ? I am trying to rotate the dipole by very small angle d theta. Now the amount of work done will be torque into this small work done. और चूंकि मैं बहुत छोटा सा रोटेशन कर रहा हूँ, I am trying to rotate it by very small angle d theta, so the work done will be very small. So work done will be W. It will be dW, where dW represents a very small amount of work done when I am trying to rotate the body by very small angle, that is d theta. अब tau को इसके जगह ये एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. We can substitute this PE sin theta in place of tau. So it comes out to be PE
sin theta d theta. Now what is this? This is the expression for what? For small amount of work done. और वो small amount of work done कब होगा? When जब हम डाइपोल को रोटेट करने की कोशिश करेंगे by a very small angle d theta. So this is the small amount of work done when we will try to rotate it by d theta. Now let us analyze what will be the total amount of work done जब हम उसको एक पोजीशन से रोटेट करते हुए दूसरे पोजीशन पर लेके जाते हैं. If we try to rotate the dipole from one orientation to other orientation, how much of work done will be there? We will analyze that, and the amount of work done will be equal to the potential energy. जो हम काम करेंगे, the amount of work which we will do will get stored as potential energy in the dipole. So let us analyze. Now remember that this dW is equal to PE sin theta d theta, very small amount of work done. सपोज करिए एक किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स राइट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. एक डाइपोल, वी हैव प्लेस्ड द डाइपोल initially the dipole was placed and it was making an angle theta 1. शुरुआत में this dipole was making an angle what? Theta 1 with the electric field. Now after some time we rotated the dipole. हमने इस डाइपोल को थोड़ा सा घुमा दिया. Let me draw another figure only so that you are not confused. तो डाइपोल शुरुआत में कुछ ऐसा था और कुछ देर बाद हमने क्या किया, डाइपोल को घुमा दिया. डाइपोल थोड़ी देर बाद या हमने रोटेट करके क्या कर दिया, थीटा 1 से इनिशियल एंगल थीटा 1 था, फाइनल एंगल हम थीटा 2 पर लेके आ गए. मतलब पहले डाइपोल ऐसे रखा हुआ था, डाइपोल वाज लाइंग लाइक दिस मेकिंग एन एंगल थीटा 1 विद द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. नाउ आफ्टर सम टाइम आपने उसको घुमा करके थीटा 2 एंगल पर ले आके छोड़ दिया. सो ये जो रोटेशन हुआ इसके लिए आपने इस डाइपोल पे कुछ टॉर्क लगाया. यू हैव टू एक्सर्ट सम टॉर्क ऑन दिस डाइपोल टू रोटेट इट फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, and during that rotation you will do some work, and that work will be stored as what? Will be stored as potential energy in this dipole. So that will become the potential energy of the dipole, which you will, or the work which you will do during this rotation will get stored as the potential energy of the dipole. So ये जो rotation हुआ थीटा 1 इनिशियल थीटा 1 टू फाइनल थीटा 2, ये जल्दी नहीं होता है. इट इज नॉट एट अ गो, एक ही बार में नहीं होता, बहुत छोटे छोटे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में होता है, डी थीटा. सो फॉर ईच स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम क्या वर्क करेंगे, वी विल डू वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज पीई साइन थीटा डी थीटा एज आई हैव टोल्ड यू. So this is the small amount of work done for what? For very small angular displacement d theta. अगर हमें टोटल वर्क डन जानना है तो क्या करना होगा, हमें ये छोटे छोटे वर्क डन्स को ऐड करना होगा. सो हाउ टू ऐड दीज स्मॉल वर्क डन्स, वी कैन इंटीग्रेट इट. सो वी विल डू इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, स्मॉल वर्क डन. सो वी विल सब्स्टिट्यूट dw over here. So it is PE sin theta d theta. Now as you can see PE, these two are constant with respect to the integrating variable, so we can take it out. ये दोनों constant है integrating variable के respect में, so हम इन दोनों को बाहर ले आ सकते हैं. So it will become what? It will be PE integration sin theta d theta. Now integration of, now मैं ये रब करके ये वाला इधर कंटिन्यू करूंगा. So you know integration of sin theta is what?
integration of sine theta is minus cos theta. What is integration of sine theta? Minus cos theta. So integrating sine theta we get cos theta. लेकिन ये जो d theta एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? इनिशियली डाइपोल θ1 एंगल पे था और हम उसको θ2 पे ले गए, तो ये स्मॉल स्मॉल जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो θ1 से θ2 तक हो रहा है. तो these will be put as limits for integration from θ1 to θ2. So these small angular displacements will be from θ1 to θ2. So we will take this minus sign out, so it becomes what? Minus EE cos theta from θ1 to θ2. On expanding this, we will get what? Minus EE cos of upper limit, that θ2, minus cos of lower limit, that is θ1. So this is what? This is the work done, and I have told you जितना काम आप करेंगे, the amount of work which you will be doing on the dipole will get stored as potential energy of the dipole. So this is the potential energy of the dipole when you rotate it from θ1 to θ2. So the expression for potential energy is what? Expression for potential energy is what? Potential energy of dipole. Now this is potential energy, don't understand it. Dipole moment and electric field intensity. Potential energy of dipole is equal to what? Minus EE cos of θ2 minus cos of θ1. So this is the potential energy of the dipole. We will talk about a few points related to potential energy in the next lecture. Today we will be continuing it till here only. Thank you so much.